Dear students, in last video we discussed about simple microscope. Now we are going to discuss compound microscope. Question is, what is it? How is it different from a simple microscope and how does it works? We used to say a compound microscope is an optical device which is used to see magnified image of any tiny object. जो मेरा simple microscope था, that was also an optical device which was used to or which is used to see magnified image of any tiny object, and it is also used to see magnified image of any tiny object. Then question is this, is there any difference between these two? And answer is yes, there is deep difference between these two. In simple microscope we studied magnifying power is near about 10, but in case of compound microscope we used to study or we used to say it can produce or it produces magnification of the order of 1000. In that very microscope, means in simple microscope, there were only one convex lens, but in it there are two convex lenses, right? One lens faces object and known as objective, having very short focal length and a small aperture. एक लेंस जो होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जिसका कि हमको मैग्नीफाइड इमेज पाना है, उस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं और ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं whose focal length is very very small and aperture means size is also small. Right? And second lens is towards eye, means towards our eye, जिधर से कि हम लोग देखते हैं, and that's why this very lens is known as eye lens or eye piece. Its focal length is comparatively larger than focal length of the ऑब्जेक्ट लेंस. यह जो ऑब्जेक्ट लेंस है इसका फोकल लेंथ अधिक होता है और इसका साइज भी अपर्चर भी लार्जर देन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने जो मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा था वह दो केसेस के लिए पढ़ा था कि when image will form at infinity, it means that when our eye will be in relaxed condition, and when second case was when image will form at least distance of distinct vision, it means that when eye will be in strained condition. Again here we will study both cases, means magnification in case of a strained condition and in case of relaxed condition. Then come our first topic, when the final image is formed at least distance of distinct vision, which is equal to 25 centimeter and denoted by capital D, right? It means that when our eye will be in a strained condition, right? See this very figure. Here you have an object AB. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि AB है, राइट? तो हमने यह कहा था that very lens which faces object is known as objective or object lens. It means that this very lens is object lens. अभी हमने पढ़ा है its focal length is small, its aperture is also small. नो डाउट दोनों जो है ऑब्जेक्टिव और आई लेंस दोनों का फोकल लेंथ कम होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा कम होता है इन कंपेरिजन टू आई लेंस, राइट? इट मीन दैट इट इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? एंड सी at this very position you are watching image
It means that this very lens is in front of eye. That's why this very lens is known as eyepiece, or eye lens. It means that we can say in this very case there are two lenses. One faces object known as objective, whereas another faces eye, or another is towards eye, which is known as eyepiece or eye lens. Right? Now see here. It is your objective and focus point is this f(o) dash. It means that in case of when we place our object AB just after f(o) dash, मीन्स फोकल लेंथ के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं. तो सिंपल यह हो गया केस कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके एफ और 2f के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. देन इट इज श्योर दैट इट्स इमेज विल फॉर्म. इसका जो इमेज बनेगा दैट विल फॉर्म बियॉन्ड 2f. ऑब्जेक्टिव लेंस के 2f से आगे बनेगा. राइट? कैसे बनेगा? देन दैट वेरी पिक्चर इज क्लियर है. हमने ऑब्जेक्ट के टिप से दो रे लिया है, वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus and second is passing through optical center. Now see here, both are meeting at this very point. As rays which are coming from tip are meeting at this very point, it means that we can say image of tip will form here. Right? Image of tip will form here. It means that here your A dash B dash, is your image of the object AB, which is found by your objective. Right? And now see here. It means that for objective, AB is object which is placed at a distance UO क्यों दिया गया? U is used for object distance और यह object distance के लिए क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए है. दैट्स वाई U for objective, UO. Right? And its image is forming as A dash B dash, means at position B dash. So image position will be this, which is denoted by sign VO dash, means image distance for objective. Right? इस लेंस के द्वारा ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज मेरा A dash B dash मेरा बन रहा है. And the image which we are getting due to objective, that very image will work as object for eyepiece. यह जो है जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज बनाया गया है ऑब्जेक्ट का, that very image will work as object for eye lens. Right? अब यहाँ पर देखिए जो है यह जो अगर आप कह रहे हैं कि यह आई पीस जो है A dash B dash जो है आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर हम लोग इससे दो रे लेकर के चलें, फिर इससे दो रे लेकर के चलें और रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन के बाद देखिए क्या होता है. यहाँ पर तो वही पीछे वाले रे को बढ़ाया गया है. यू कैन टेक पैरेलल रेज एंड पासिंग थ्रू फोकस रेज. You can take first ray parallel to principal axis. After reflection, it will pass through focus, and second ray passing through optical center. It will pass lens undeviated. देखिए दोनों मिल नहीं रहा है. ना produce both in backward direction. Then what we are observing, both are meeting here. It means that final image will form here. Right? It means that for eyepiece, for eye lens, A dash B dash is act like object and its image is forming as A dash B dash, whose height is H double dash. Right? Clear? ऑब्जेक्टिव के द्वारा ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट ए बी हुआ जो कि फोकस से बाहर है. उससे मेरा इमेज जो बन रहा A dash B dash, दैट इज वर्किंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस. और फाइनली इमेज हम लोग यहाँ बना रहे हैं. राइट? वी आर डिस्कसिंग दैट कि व्हेन फाइनल इमेज विल फॉर्म एट D, it means that
this very distance is your least distance of distinct vision, right? अब याद कीजिए लेशन, यह जो मेरा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है और इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव, जो कि इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम लोग अपने लेंस को, हम लोग अपने इन दोनों लेंस के बीच के पोजीशन को इस तरह से प्लेस करते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट इमेज है ऑब्जेक्टिव के द्वारा, जो कि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वह आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। देन सी हियर, इट इज योर आई पीस, यह आपका जो है ये आपका आई पीस है, इसका फोकस पॉइंट ये है, एंड इट मीन दैट दिस वेरी ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन O point means E and F of the lens, right? And finally we are getting image at D, right? Clear up to this? Then now question is this, जरा सा इस फिगर में ध्यान से देखेंगे। पहला वाला क्लियर है, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रहा है दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर, और फिर वह जो इमेज है ऑब्जेक्टिव का विच इज़ वर्किंग एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, वह जो है फिर समझ लीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस बन रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने ओ और एफ के बीच में रखा है, तो उसका मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इमेज वी आर गेटिंग हेयर, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस, हम लोग जो है इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते थे। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर, इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? तो याद कीजिए हम लोग लिखते थे मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, वेयर बीटा इज एंगल मेड बाय इमेज एट द आई एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। जरा ध्यान से देखेंगे, आपका जो इमेज है दैट इज़ फॉर्मिंग एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ऑब्जेक्ट आपका मे बी अंडर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो सकता है, लेकिन अगर उतना पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है हमको दिखेगा नहीं, वी कांट मेजर दैट वेरी एंगल। दैट्स वाई इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को भी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखेंगे, राइट? तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखेंगे। दैट्स वाई सी फिगर नंबर 2, इसमें हमने क्या किया है ये ऑब्जेक्ट को हमने डी डिस्टेंस पर रख करके, रख करके जो है हमने आई पर एंगल मेजर किया है विच इज योर अल्फा, राइट? Then what we should write magnifying power? Here we should write it is ratio of angle subtended at the image by the final image to the angle subtended at the eye by the object when both are at least distance of distinct vision। इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, बन रहा है, तो वो तो सही है। ऑब्जेक्ट मेरा लिस्ट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, इसलिए हम लोग जो उसके लिए एंगल लेंगे लिस्ट डिस्टेंस पर प्लेस करके लेंगे। एंड सिंपली वी विल से कि हेयर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट द आई when formed at least distance of distinct vision to the angle made by object at the eye when placed at least distance of distinct vision। It means that here we should write m equal to beta by alpha. Sorry, here magnifying power is denoted by a small m sign. We should write a small m equal to beta by alpha, and as these beta and alpha are very very small, so it will be equal to 10 beta and 10 alpha. So we can write m will be equal to beta by alpha, which is equal to 10 beta by 10 alpha. Now question is this, what will be value of 10 beta and 10 alpha? Once again come over figure, फिर से एक बार फिगर पर आइए।
See, it is your final image, and angle made by final image at the eye is beta. ये बीटा है, राइट? यही हमको टेन बीटा निकालना है. देन वी कैन राइट टेन बीटा विल बी इक्वल टू P by B. We should write, but my dear, this very object which is image for objective, this very object A dash B dash which is image for objective is also making angle beta at the eye. When you will think over these two triangles, a bigger triangle and a smaller triangle, this angle is common for both. This angle 90 degree, this angle 90 degree, then third angle will be also same, and it means that all three angles are same. So by a similarity rule, both angles are congruent. So we can write this by this will be equal to this by this, or we can write this by this will be equal to this by this. तो हम लोग को यहाँ जो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू टेन बीटा विच टेन बीटा बाई टेन अल्फा, और यहाँ जो हम लोग लिखेंगे टेन बीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, इन प्लेस ऑफ टेन बीटा इक्वल टू दिस बाय दिस वी कैन राइट टेन बीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, बिकॉज बोथ एंगल्स आर सिमिलर, both triangles are similar, right? Then what we should write? Tan beta equal to, we should write tan beta equal to this A dash B dash by EB dash, right? By EB dash, and A dash B dash is your with proper sign convention minus H dash, by EB dash is your object distance which is your UE, it will be with minus sign, minus UE. It means that it will be equal to minus H dash by minus UE, right? We can write tan beta equal to this, and then what will be value of tan alpha? Then we can write tan alpha equal to P by B. Then come over this very triangle, इस triangle में आ जाइए, tan alpha equal to AB by, let us suppose it is your M, then AB by MB. AB is your H above principal axis with plus sign, and EB is your opposite to the direction of the incident ray, so it will be with minus sign, minus D. It means that tan alpha will be equal to H by minus D, right? So we can write M will be equal to tan beta by tan alpha, which is equal to minus H dash by minus UE divided by H by minus D, right? 1 minus cancel, so it will become minus H dash by H into D by UE, D by minus H by H dash into D by UE. Now see here, minus H by H dash by H dash is image for objective, H is object for objective, means image height by object height, and image height by object height is equal to linear magnification M, and this which is produced by objective, so we can write it will be equal to MO, right? And D by UE will be equal to ME. D by UE will be equal to ME. Why will be equal to ME? Then we can say, you can come over figure. Yes, see here. ME equal to magnification, linear magnification produced by objective is equal to image height by object height, which will be equal to this by this. It is your D and it is your UE, so we can write it will be equal to this by this.
That's why we have written here d by ue equal to me, right? एंड नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एमओ। तो हमने लिखा है एम ऑब्जेक्टिव लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। और हमने यह पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। सो मैग्निफिकेशन linear magnification for objective will be equal to v by u for objective means vo by uo, right? एंड एम ई विल बी इक्वल टू, यहाँ जो एम ई होगा मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस बाय और सॉरी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस को है आपने अभी डिफाइन किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, व्हेन इमेज विल फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस डी बाय यू ई, राइट, 1 प्लस डी बाय यू ई। सो वी कैन राइट and this very UE will be equal to F D by UE। और याद कीजिए कि हम लोग इस D by UE को सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हम लोग जो है D by FE में कन्वर्ट किए थे। सो वी कैन राइट M इक्वल टू माइनस VO by UO इंटू 1 प्लस D by F E, right, 1 plus D by F E, right? Sorry, here we have done one mistake. Here we should not write 1. ME equal to D by UE, and this very D by UE will be equal to 1 plus D by FE, right? It means that we can write magnifying power will be equal to minus VU by UO into 1 plus D by FE. Now object AB is placed, हमने यह पढ़ा है focal length of objective is very small and your object is placed near to object AB is placed near to focus point of the objective. It means that we can say UO will be equal to FO. UO will be very near to FO. So we have written here UO will be equal to FO, and with proper sign we have written here UO will be equal to minus FO, right? And image A dash B dash, this very image A dash B dash is formed by which is formed by first lens is close to आई पीस। सेकेंड लेंस जो है उसका भी फोकल लेंथ कम है और इमेज जो बन रहा है फोकल लेंथ के जो है इस राइट साइड में बन रहा है मीन्स वेरी क्लोज टू आई पीस। इट मीन दैट VO विल बी इक्वल टू लेंथ बिटवीन both lenses which is also known as length of the microscope, right? And when we will use these two values, इन दोनों वैल्यू को यूज करेंगे, then your M will become, then your formula of magnifying power will become M equal to MO equal to VO by UO which is equal to L by FO, and when you will use this then your relation will become M equal to L by FO, माइनस कैंसिल हो जाएगा, L by FO into 1 plus D by FE. It means that magnification produced will be equal to L by FO into 1 plus D by FE, right? Now come over what will be value of magnifying power M when final image will form at infinity. It means that when your eye will be in relaxed condition. See this very figure. It is your objective, आपका ऑब्जेक्टिव है, इट इज योर आई पीस है, इसका
फोकल लेंथ कम है, इससे इसका फोकल लेंथ थोड़ा अधिक है, नो डाउट दोनों का कम है, बट फोकल कंपेरेटिवली फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज मोर देन ऑब्जेक्टिव. Size of means aperture of objective is less, but that of eyepiece is more. Right? Here we have placed object AB beyond focus point of the objective. इसका इमेज देखिए यहाँ पर बन रहा है a dash b dash, and this very a dash b dash will work as object for eyepiece. Right? अब हम लोग लेंस को और पीछे बढ़ा करके, आईपीस को और पीछे बढ़ा करके इस ऑब्जेक्ट जो हम लोग आईपीस को और पीछे बढ़ाएंगे तो श्योर है एफ पॉइंट, इसका फोकस पॉइंट भी उधर राइट की तरफ भागेगा और राइट की तरफ भागेगा. तो इतना भगा दें कि इसका एफ पॉइंट इस इमेज पर आ जाए, बी पॉइंट बी डैश पॉइंट पर आ जाए. इट मीन दैट क्या हो जाएगा, नाउ a dash b dash which is image formed by objective which is working as object for eyepiece is placed at focus of the eyepiece. और अगर फोकस के आईपीस पर, आईपीस के फोकस पर रहेगा, इट मीन दैट, तो आप क्या कह देंगे, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. राइट, इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. Its image will form at infinity. It means that very big image will form. Right? Now question is this, कि what will be value of magnifying power in this case? Then simply we can say कि it is ratio of angles subtended at the eye by the final image when formed at infinity. When formed at infinity to the angle subtended by object at the eye when placed at least distance of distinct vision. Right? Then what we should write, m will be equal to beta by alpha, right, which will be equal to 10 beta by 10 alpha. 10 beta क्या होगा, तो लिशन 10 beta will be equal to image p by b and 10 alpha will be equal to also p by b. जरा सा ध्यान से देखिए, once again come over figure. See here, let us suppose it is your image which is making angle beta at the eye, right? Then this triangle as well as this triangle both will be similar. So 10 beta हम लोग इसी छोटे के लिए ले लेंगे. Then what we should write, 10 beta will be equal to, we should write 10 beta is equal to a dash b dash by e b dash, and a dash b dash is your, if when you will consider this very image as h dash, then it will be equal to minus h dash by eb will be equal to minus fe. Why minus fe? Because हमने इसको फोकस पॉइंट पर रख दिया है, फोकल लेंथ पर रख दिया है, सो इट विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस. राइट, and 10 alpha we should write 10 alpha will be equal to p by b. तो यह क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आपने फिगर देखा था, इन्फिनिटी वाला फिगर जो देखा था, दिस वन, अल्फा इक्वल टू p by b, which will be equal to p will be your h and b will be your minus d, this d, and it is your h, object height. So your expression will become 10 beta m equal to beta by alpha, which is equal to 10 beta by 10 alpha, and 10 beta will be equal to minus h dash by minus fe, and 10 alpha will be equal to h by minus d. Minus minus cancel, then this very expression will become minus h dash by h into d by fe, which will be equal to minus h dash by h will be equal to mo, and d by fe will be equal to me. Right?
It means that here MO is equal to H dash by H, which is equal to, we should write magnification produced by objective will be equal to image height by object height, which is equal to V by U, which is equal to V by U. Then here we can write VO by UO, right? VO by UO. And now once again come here. अब जरा सा फिर से सोचो कि जो है इमेज जो है फोकस सेकेंड लेंस का मीन्स आई पीस का फोकल लेंथ बहुत ही कम छोटा है मीन्स इमेज ड्यू टू फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव इज फॉर्मिंग very near to eyepiece. So this very VO will be equal to length of the microscope, and UO is very near to focus point of the objective, so it will be equal to minus FO, right? And what will be value of ME? Then we can say ME will be equal to D by FE. So overall formula will become M equal to L by FO, minus cancel, then L by FO into D by FE, L by FO into D by FE, right? This M equal to L by FO into D by FE, right? Now see here both FO and FE lying in their denominator, दोनों डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, और हम लोग यह पढ़े हुए हैं कि दोनों का फोकल लेंथ बहुत ही कम होता है. इट मीन दैट when both FO and FE, when both FO and FE will be small, then magnifying power will be no doubt very large, right? This is the theory of compound microscope. Okay.